Initialization, okay. All these constructors are used to initialization purpose only. But what type of values? Yes, default constructor will initialize the instance variables with default values. और आपका इंस्टेंस वेरिएबल्स को जो भी रहेंगे उनको सबको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगा, इट विल गेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और दूसरा आपका आता है जीरो पैरामीटराइज। जीरो पैरामीटराइज बाय डिफ़ॉल्ट आप उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं लिखते हो, तो आपके जो भी वेरिएबल्स रहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल्स उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर आपको खुद का डमी वैल्यू चाहिए, इफ़ यू वांट योर ओन डमी वैल्यू, देन यू कैन गो विद द जीरो पैरामीटराइज। जीरो पैरामीटर्स हम लिखते हैं लेकिन मोस्टली उसके अंदर इनिशियलाइजेशन नहीं करते हैं, सो दैट इज जस्ट टू कीप इट। अगर आप जीरो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते और पैरामीटराइज लिख देंगे तो क्या होगा, आप फोर्स कर रहे हो किसी को वैल्यू देने के लिए। मतलब आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे रहे हो, मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग सम इनपुट, राइट। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम देंगे, वो भी देंगे, और नॉन पैरामीटराइज दैट इज जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हम देंगे, क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप वैल्यू दे दो बस, ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट फोर्स द यूजर दैट टू ऐड वैल्यूज, सो वी प्रोवाइड जीरो पैरामीटराइज एज वेल एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो जो जिसका रिक्वायरमेंट होगा वो उसको यूज कर सकता है, ठीक। तो हम दोनों कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करते हैं यूजुअली, पैरामीटराइज और जीरो, राइट। तो जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो हम लिखते हैं उसे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और जो आप दूसरा एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करते हो जिसमें सारी वेरिएबल्स आपकी इनिशियलाइज होती है, इंस्टेंस वेरिएबल्स, तो उसे ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बोला जाता है, राइट। हाँ, ऑल आर्गुमेंट्स में तो आप पार्शियली दूसरा ले सकते हो ना, वन पैरामीटर, टू पैरामीटर, थ्री पैरामीटर आप कर सकते हो, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। समटाइम आपको रिक्वायरमेंट हो सकता है कि आपको कुछ पार्शियल वैल्यूज फिल करना है, तो आप दूसरा कंस्ट्रक्टर भी दे सकते हो। लेकिन एक गुड प्रैक्टिस होता है कि आप क्या करते हो, एक तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर देते हो और दूसरा ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर देते हो। और आपको दूसरी वैल्यू सेट करनी है तो आप बाद में सेट करते हो मेथड से, आप मेथड्स का यूज करके सेट कर सकते हो, ठीक है। चलो ये कंस्ट्रक्ट, हाँ हाँ बोलो। करेक्ट, करेक्ट। So by default, initialization happens in all of the constructors. So default constructor, it will be initialized with default values. And zero parameters constructor, it will be also automatically done with the default values if you do not provide any other value. Tick. And then we have seen methods. So methods day before yesterday we have seen methods. The day before that we have seen variables. So variables, methods, and constructor. So what is method, what is variable, what is constructor, why do we use variable, why do we use methods, why do we use constructor, what are the different types of variables, what are the different types of methods, what are the different types of constructor, ये आपको पता होना चाहिए। और इनको कैसे यूज़ करना है, कैसे एक्सेस करना है। एवरीवन इज एबल टू एक्सेस द मेथड्स, everyone is able to access the variables, everyone is able to access constructors, right? ठीक है। So today we will learn assignments. Did we try assignments yesterday? Ronald, how many assignments you have done? क्यों अभी तक वही? हाँ, ठीक, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ललित, हो गया? कितना बाकी है अभी? मैट्रिक्स वाला एरे का ना, दैट यू कैन स्किप। Yes, that's fine. Okay, so today we will be learning blocks. We will be learning
So we'll be talking about today instance block and static block. So I have just given a class name as this, a bigger one, just to identify. This is the demo for this. So what is instance block? What is static block? Very simple. If you have already understood what is that instance block. So it is a block of code that we write outside of block of code outside of all methods, all constructors, and nested classes. Right? So this is called an instance block. इसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंस ब्लॉक. इसके अंदर आप नॉर्मल जावा जैसे मेन मेथड के अंदर कोड लिख देते हैं, सेम कोड यू कैन आल्सो राइट इट हियर. Okay. Similarly, what is the static block? Block of code outside of all block methods, all constructors with static keyword. So I write this static keyword and after that I write this. So this is called as static block. So let's talk about what is, so what question we are just trying to understand. What is an instance block? What is an instance block? It is a block of code enclosed with curly braces outside of all methods, constructors without static keyword. Perfect. What is a static block? It is a block of code enclosed with curly braces outside of all methods, constructors with static keyword. ठीक. When instance block code will be executed. What do you think? When instance block will be executed. Now I will write a main method here. I will write a main method. Now this instance block will be executed every time you create object of this class. Every time you create object of this class, this instance block will be executed. Now if you see here, we'll just create a demo new instance block. Okay, so we know that whenever you create an object of this class, this instance block will be compulsorily executed without thinking anything. Now when this static block will be executed? Perfect. So instance block will be executed when an object of the class is created. When static block code will be executed, it will be executed only once, when the class is loaded in the memory. When the class is loaded in the memory.
Now we know that this particular code will be executed only once when this particular class is loaded in the memory. This instance block will be executed. ये वाला instance block हमेशा एग्जीक्यूट होगा जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे. लेट्स से मैंने 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, लेट्स से demo1 demo2, तो आपका इंस्टेंस ब्लॉक कितने बार एग्जीक्यूट होगा? 2 बार. इस टाइम एक बार और इसके बाद एक बार. ठीक है, लेट्स रन दिस. सो स्टैटिक ब्लॉक आपका एक बार एग्जीक्यूट होगा जब भी कोई आपका क्लास लोड होगा मेमोरी में, एक ही बार. इंस्टेंस ब्लॉक कितने बार एग्जीक्यूट होगा? जितने बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतने बार आपका इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. इफ यू सी हियर, स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, बट योर इंस्टेंस ब्लॉक इज executed every time you create a object. Every time you create a object. Now I have created 6 objects, so your instance block will be called 6 times. See here. Okay. Very simple. Okay, now we know that what is this and when this code will be executed. Now you tell me when to use or why to use. Why to use instance block? Yes. Why to use static block? क्यों यूज करना चाहिए? क्या रीजन है कि आप इनको यूज करना चाहिए? ओके, जब भी कोई आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपका इंस्टेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. लेकिन मतलब आपको ये तो गारंटी है कि अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आपका इंस्टेंट ब्लॉक कॉल होगा, एग्जीक्यूट होगा. लेकिन आप उसमें कौन सा कोड लिखोगे? ऐसा ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा. करेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक. मतलब आपको मेंटेन करने के लिए से किसी ने अभी कोई बैंक अकाउंट कोई क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, तो आप कोई ऑडिट पर्पस के लिए आपको रखना पड़ेगा ना कि ये बैंक अकाउंट कब क्रिएट हुआ था, राइट? या कोई आपको टाइम स्टैम्प मेंटेन करना पड़ेगा कि इस टाइम पे आपका बैंक अकाउंट क्रिएट हुआ है, राइट? तो आपको ये मेंटेन करने के लिए आप जब भी कोई बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपको कोई ऑडिट रखना है कि अभी इस टाइम पे इस डेट पे आपका इस पर्टिकुलर कस्टमर का ऑब्जेक्ट या अकाउंट क्रिएट हुआ है. तो ये ऐसा इंफॉर्मेशन रखने के लिए आप यूज़ करते हो इंस्टेंस ब्लॉक, राइट? और दूसरा, अभी मुझे मेंटेन करना है कि कितने सारे अभी तक कस्टमर के अकाउंट्स क्रिएटेड है. मुझे काउंट मेंटेन करना है कि इस पर्टिकुलर क्लास के, मतलब बैंक अकाउंट क्लास के कितने सारे ऑब्जेक्ट्स बने हैं. ऐसा काउंटर मुझे रखना है, राइट? मुझे क्या मेंटेन करना है? मतलब काउंट कैसे बढ़ेगा? जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो इंस्टेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो उसके अंदर हम एक कोई काउंटर रख सकते हैं, एक स्टैटिक वेरिएबल जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहेगा, 1 2 3 4 5. तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट काउंटिंग का लॉजिक रखना है या कोई ऑडिटिंग इन्फॉर्मेशन रखना है तो आप वो कहाँ पे लिखोगे? इंस्टेंस ब्लॉक में. कहाँ पे रखोगे? इंस्टेंस ब्लॉक में. सो वी राइट ऑडिटिंग, logging, maintaining logic as well as object counter logic we can keep. So to write auditing, logging logic as well as object counter logic we can keep, we use instance block. Okay, so why to use static block? कॉमन लॉजिक. जैसे आपको कोई ऐसा कोई लॉजिक है जो आपको बस एक बार एग्जीक्यूट होना चाहिए. जैसे आपका क्लास मेमोरी में लोड होता है, इमीडिएटली आपका स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट? तो आपको ऐसा कोड एग्जीक्यूट करना है जो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा.
जैसे आपको कोई डेटाबेस को कनेक्ट करना है या कोई सर्वर को कनेक्ट करना है, ऐसा कोड आप इस पर्टिकुलर स्टैटिक ब्लॉक में लिखते हो. सो इस स्टैटिक ब्लॉक में वी यूज स्टैटिक ब्लॉक टू राइट वन टाइम एक्टिविटी logic such as connecting to the server database, loading the drivers, right? So ऐसा लॉजिक आप इसमें लिख सकते हो. ओके, सो वी यूज स्टैटिक ब्लॉक टू राइट सम कोड विच इज वन टाइम इन नेचर, मतलब वन टाइम आपको एग्जीक्यूट करना है. तो कनेक्शन आपको एक बार ही करना होता है डेटाबेस को, या ऐसा कोई डेटाबेस ड्राइवर लोडिंग करना है, तो ऐसा काम आप इस पर्टिकुलर ब्लॉक में लिख सकते हो. यू कैन राइट सच लॉजिक. परफेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ वी हैव methods, we have constructors, we have blocks, right? Now we are having three things which are getting executed automatically: constructors, instance block, and static block, right? Now what I will do, I will just create a class that is, let's say, I have a class called as order service. Now there I have instance block, then I have static block, and I have constructor also, right? I have a constructor also. This is a zero parameterized constructor. Now I have a main method inside this class. Now if I run this program, what will the output? Is there anything to learn? Why constructor? When constructor will be called? Did we create any object? No. Then constructor will not be called. Then instance block will not be also called. So what is the one thing that will be executed? That is only static block. Now if I run this, static block will be executed. Static block, right? Now I will create object of this class, order service equal to new order service. Now when I run this program, what will the output? What is the first thing that will be executed? First of all, static block, there is no confusion. Now there is a confusion between instance block and constructor. So what will be executed first? Constructor. Okay, constructor. So let me tell you, now when I execute this code, first thing that will be executed is static block.
then control will come to constructor, and constructor will check do we have any instance block or not, right? Now constructor does two things. There are two things he checks. So control will come to constructor, and he will check these two things. What is the first thing? He will check do we have any parent class constructor? No. If it is so, then parent class constructor will be executed. Right now in our case we don't have parent class constructor. Second, so do we have instance block? Yes. So then control will come to instance block will be executed, and then control will come to this one, right? Let's run this. What is the first thing it is getting executed? Static block. Static block. Then after that, where does control go? Now control will come to main method. Here control will go to constructor. From constructor it will automatically go to the instance block. Instance block is completed, and then control comes here. It will execute zero parameters constructor. Right? So what is the order of execution? What is the order of execution? वो directly internally call होता है वो, that is an internal call. Even though you do not see, there is an internal call, so it will directly go there. Correct, correct. So order of execution, what is the order of execution of static block, instance block, and constructor? What is the order of execution? The first static block, then instance block, then constructor. Even though control is going to the constructor, but it is going to execute. Yes. This is also one of the favorite interview question. They will ask you, they will try to understand. Yes, yes. So let's say like whenever it is configured in such a way that whenever the class is loaded, first static block will be executed. Whenever you try to create an object, then instance block will be executed, and then followed by constructor. Correct, correct. Sorry, like you are saying, if I do not write this curly braces, so you will get compile time error. Why? Because we cannot write out the code, we cannot write instructions outside of this. It should be part of a curly braces, either part of method, constructor, or a block. Correct. Yeah, orphan हो गया. Right? Okay, so we'll try to create object of this class. Let's say we will try to create product. Do we have product class? Yes. So a lot of things are already there. I will use some other class. I will create a class called as
episode. Now I want to keep a counter at how many objects of this particular class are created, right? Now if I write int episode object counter and I will initialize with 0. Now what will happen? What is the type of variable? Instance variable, right? Okay. So what I will do, every time the object of this class is created, I will say episode counter plus plus. Okay, episode 1 equal to new episode, and now the interesting question is number of objects created. Now how do I access this variable? How do I access this variable? What is this variable? Instance variable. And how do we access the instance variable? We need a reference. So which reference shall I use? Any reference? Okay, so let me use episode 1 dot object counter. So what is the output? It will be only 1, but it should be 5, right? Then because this counter is a variable only specific to this episode 1. Episode 2, again we have another variable, that is episode object counter. Again it will be changed to 1. Then episode 3 1, episode 4 1. So we have to make this as a static. So this is common. This is common. So I use this as a, now it will maintain. So this is not something going to change from one object to another object. So this will be common for all of the objects. So first time what will happen, control goes there. Let's debug this. Let's debug this. Control goes here. Initially object counter is 0. It will be incremented by 1. Again next object, control goes again to the instance block. Then control, initially object counter was 1, it will be changed to 2. Again episode 3, episode 4, episode 5, and lastly you will print the number of objects created. Now what is the number of objects? It is 5. So this is one of the use case where you can use instance block. So how many objects are created? To maintain that we use this one. Easy? I hope this code is simple enough to understand. Sure. Thoda. Ronald. Easy hai. We have seen this variable part, instance variable, static variable. Here. Now what is the next thing we have to start today? Nested class. We have to start with the nested class. So I will create a class called as, let's say, constant. So what is nested class? We'll talk about that. A class which is defined inside another class, that is called as nested class. What is a nested class in Java? It is a class defined inside another class. So if I have defined a class, now let's say I have this class A class. Now inside this class, if I define another class, class B. So this class is called as nested class. This class is called as nested class.
Now the question is, what are the different types of nested classes are there in Java? Number one, that is called as non-static nested class or inner class. This is called as non-static nested class or inner class. Second one is called as static nested class. Third one is called as local inner class, and fourth one is called as anonymous class. So this last one, anonymous class, we will be seeing once we know the concept of inheritance. Once we know the concept of inheritance, we will understand this anonymous class. So right now we will understand these first three. What is non-static nested class, static nested class, and local inner class. So what is non-static nested class or inner class? What is static nested class? What is a local inner class? So these things we should know. Okay, let's try to understand what is a non-static or a inner class. Now can you see this class is called as non-static nested class, and I have another class C. This is called as static nested class. This class is called as static nested class. And third, I have a main method, and inside a method I define a class D. Now this class is called as local inner class. So can we define now what is nested class, what is static nested class, and what is local inner class? Can we define a non-static nested class or an inner class? What it is? It is a class defined inside another class without static keyword. Without static keyword. Okay, then what is static nested class? It is a class defined inside another class with static keyword. Which one? It is a class defined inside another class without static keyword, outside of all other components, we can say all other class components. Perfect. What is local inner class? It is a class defined inside another inside a method, constructor, or block without static keyword. So it is a class defined inside a method, constructor, block without static keyword. So it is called as local inner class. So what is first thing? What is static? What is nested class? A class defined inside another class. That's fine. Then what are the different types of nested classes we have? We have three types of nested classes: static nested class, inner class, or local inner class. What is static nested class? A class defined inside another class outside of all other components with static modifier. Then we have inner class
or a non-static nested class. This is called as inner class or non-static nested class. A class which is defined inside another class outside of all other class components without static keyword. तो यहाँ पे कोई static keyword है क्या? नहीं है. तो इसके पहले static keyword लिख दिया तो ये हो गया आपका static nested class. अगर आपने कोई constructor, अभी मेरे पास constructor भी हो सकता है, right? Let's say I have a constructor and there I define a class let's say D. This class D and this class D, these are different because they are local to this particular method, this is local to this particular constructor, and I have class let's say D. So this is also local inner class. This is also local inner class. Simple. Take care. Now next question is, now what question we are clear, what are the different types, what it is. Now what is the next question? How do I use that? So why do we need a class? We know why do we need a class? To create objects, okay, to have a plan. So we can have a plan inside a plan also, that is perfectly fine. So typically we use these nested classes to logically group the associating classes. मतलब आपको पता है कि ये क्लास कहीं और यूज नहीं होने वाली, तो लॉजिकली ग्रुप मतलब इसको बाहर कहीं और ज़्यादा यूज नहीं होली, तो आप इसके एक साथ ही लिखते हो. बट इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस. देर इज ओनली वन गुड प्रैक्टिस, राइटिंग इफ यू वांट टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स. इफ यू वांट टू मेंटेन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स तो आप यूज करते हो स्टैटिक नेस्टेड क्लास. आप यूज करते हो स्टैटिक नेस्टेड क्लास. दैट इज वन यूज केस दैट वी हैव बीन यूजिंग लॉट ऑफ टाइम. वो कैसे यूज करते वी विल सी दैट. ठीक है. But it is not good practice that we write class inside a class. We should have a separate classes to avoid the confusion. There is only one case where you will maintain. So why to use? The question is why to use nested classes. So we use nested classes to logically group the classes which are not used elsewhere. मतलब बाकी कहीं यूज नहीं हो रहा, वो आपको वही लॉजिकली यूज कर रहे हो तो आप यूज करते हो नेस्टेड क्लास. ठीक है. Our next question is how do I use inner class. How do I use inner class? How do I use static nested class? उसको कैसे यूज करेंगे? How do I use local inner class? सबसे सिंपल लोकल इनर क्लास. आप मेथड के अंदर डिफाइन करते हो क्लास को, उसको वहीं पे डिफाइन करो और उसको वहीं पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और वहीं पे उसका यूज़ करो. मतलब सब कुछ मेथड के अंदर ही होगा, उसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते. सो लोकल इनर क्लास आर लोकल टू method, constructor, block. So we define them and use that there itself. As cannot
access local inner classes आउटसाइड ऑफ, जैसे आपने लोकल वेरिएबल देखा है वैसे ही इसको आप उसके बाहर यूज़ नहीं कर सकते। तो सिंपल क्या करना है आपको, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको यहीं पे यूज़ करो। अभी लेट्स से इस क्लास के अंदर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, इस क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स है, लेट्स से इंट इक्वल टू 100, ठीक है। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहीं पर बनाओ और यहीं पर उसको एक्सेस करो। सो डी डॉट ए, दैट्स इट, डी डॉट ए विल प्रिंट दी 100। क्लास डिफाइन करो यहीं पर, ऑब्जेक्ट भी यहीं पे क्रिएट करो और उसका डेटा जो भी एक्सेस करना है, मेथड्स जो भी है, तो वो यहीं से एक्सेस करो। तो ये लिस्ट यूज्ड है, ये इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है लेकिन है, फैसिलिटी है, इट इज़ अ फैसिलिटी वी हैव, ठीक। Okay, next, now we know what is a local inner class. Then how do I use local inner class? Local inner class is a class defined inside a method, constructor or block. Since it is local, we cannot access that outside of the method, constructor or block, and we can use that class inside the method itself. मतलब class define भी वही करो, object भी वही create करो और उसका access भी वही से करो. That is simple short for local inner class. This is the least used. ठीक. Now I have two other things outer, that is nested class, that is static one and non-static one. So we'll try to use that also. So I will create a class, let's say outer, and there I will create a class called as inner class. Name itself I have given as inner. Now one more thing, there was one more thing I forgot to mention. So if you see in local inner class, if I try to add a static variable, you cannot do that. You cannot add a static block also. You cannot add a static method also. Static void. So you cannot add static method also. You cannot add a static nested class also. Static class, let's say C. So one thing you can remember, in local inner class, we cannot write static variable, static method, static block or a static nested class. So this is very important. Inside the local inner class, we cannot write static variables, methods, blocks and nested classes. Otherwise we get a compile time error. Check. So this is all about your local inner class. So next we'll talk about let's talk about this. We'll talk about now non-static member. We'll talk about this non-static thing. Okay. So next question is, what is non-static or inner class? What is inner class?
a class which is defined inside another class outside of all other components without static keyword. अभी इसको कैसे यूज करेंगे अपन? So how do I use this? How do I use this? Now I have these two classes, outer and inner. Now remember, just like your local inner class, I cannot write static int a equal to 100 if I write static block, if I try to write static void m, and we have, if I try to write static class e. So we cannot write static members inside the inner class as well as local inner class. In short, we cannot write static members. Same thing for this. Inside inner class, we cannot write this. Otherwise, we get a compile time error. Now static things are not allowed inside the inner class as well as, that is, inner class is also called as non-static class, non-static nested class, and local inner class. So there are two things, inner class and local inner class. Both the classes do not allow static members. तो आप जो भी लिखोगे अभी क्या लिखोगे? इंस्टेंस स्पेसिफिक, इंस्टेंस मेथड्स, इंस्टेंस वेरिएबल जो भी है. अभी यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंस्टेंस वेरिएबल लेट्स से a इक्वल टू लेट्स से 100 and I have method void m1. This is the instance method. This is inner class instance method. What is this a? I will write a and this one. I have these two things. Now I have this class, inner class inside the outer class. Now I will test this. I will create a class test inner class. Okay, there I have main method. Now can someone tell me how do I create object of this class, inner class? Can I directly, outer class I can directly create the object, right? Outer, that is perfectly fine. But what about inner class? Can I write inner equal to new inner class? I cannot do that. Why? Because that is part of that particular outer class. So if you see here, so this is part of, I am getting the error. I कहाँ पर? हाँ, तो अभी कैसे एक्सेस करोगे आप इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे? आप मुझे बताओ इस क्लास के अंदर, अभी ये नॉन स्टैटिक है राइट, दिस इज इनर क्लास इज नॉन स्टैटिक. int equal to 100, let's say b a equal to 10,000, void m equal to, ये किसकी मेथड है? आउटर इंस्टेंस मेथड. तो आप मुझे बताओ इसको कैसे एक्सेस करेंगे, a और m को हम इसको एक्सेस करेंगे आउटर डॉट ए. ये इसका पब्लिक नहीं है इसलिए पब्लिक एंड इसको भी पब्लिक बना देते हैं बिकॉज वी आर इन द, ठीक. आउटर डॉट ए और आउटर डॉट m1 ऐसे एक्सेस किया. कैसे एक्सेस किया हमने? पहले रेफरेंस बनाया, उस रेफरेंस का यूज करके डॉट ऑपरेटर यूज करके हमने रेफरेंस वेरिएबल एक्सेस का यूज करके हमने इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस किया, मेथड भी एक्सेस किया, राइट. 10,000 इन आउटर इंस्टेंस मेथड. आप मुझे बताओ, मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, किस क्लास का? इनर क्लास का. तो मुझे कैसे एक्सेस करना पड़ेगा उसको? आपने इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे एक्सेस किया? रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके. आपने इंस्टेंस मेथड को कैसे एक्सेस किया? यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल. तो वैसे ही आप इनर क्लास को कैसे एक्सेस करोगे? यूजिंग रेफरेंस.
तो अगर आपको चाहिए आउटर डॉट इनर, इनर न्यू, न्यू मतलब आप डायरेक्टली आप इनर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, ये ऑब्जेक्ट इसको बिलोंग करता है आउटर, सो आई विल राइट आउटर डॉट इनर। क्या एरर आ रहा है आपको? ओके, ये दिस शुड बी स्मॉल। ऐसा लिखना पड़ेगा। सो आउटर का रेफरेंस यूज करके आपने क्या किया, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया? इनर क्लास का। दिस इज अ लिटिल ट्रिकी सिंटैक्स बट दैट इज फाइन। आउटर डॉट इनर, इनर रेफरेंस, और आउटर का ये क्या, आउटर क्या है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, तो रेफरेंस वेरिएबल डॉट न्यू, तो ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इनर क्लास का ऑब्जेक्ट। अभी बाकी तो सिंपल है, रेफरेंस मिल गया तो आप बाकी सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। इनर डॉट इनर, इनर क्लास के अंदर क्या है? ए है, लेकिन ये पब्लिक दूसरे पैकेज में, इसलिए एक्सेसिबल नहीं हो रहा है, तो हम इसे पब्लिक बना देते हैं। इनर डॉट ए, और दूसरा इनर डॉट m1 मेथड। अब ये किसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया? इनर क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे ऑब्जेक्ट बन गया, बाकी सेम ही है जैसे आप नॉर्मली क्लास का एक्सेस करते हो। सिंपल, देखो ये क्या, आउटर क्लास का एक्सेस किया, फिर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन आपने स्टार्ट किया यहाँ पर। यहाँ से 100 मतलब कौन सा 100? इनर क्लास का 100। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इनर डॉट m1, कौन सी m1? इस क्लास की। सिंपल, बस थोड़ा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना थोड़ा आपको टेढ़ा लग सकता है, लेकिन थोड़ा हैंग आ जाएगा आपको, इसका समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। ओके, चलो 4 शब्द इनर क्लास के बारे में बोलते हैं एंड देन वी कैन रैप इट अप। चलो ललित, फटाफट बताओ इनर क्लास के बारे में 4 शब्द। व्हाट इट इज, why do we use it, how do I use it, how do I create an object, how do I, what all things I can write inside the inner class, and how do I access the members of inner class, how do I create the object of inner class। चलो एक एक बताओ। what is I will start with what is inner class। class defined inside another class without static keyword, ये हो गया आपका इनर क्लास का डेफिनेशन। दूसरा, यूज क्यों करते हैं हम इनर क्लास? to logically group the classes which is not frequently used outside of the other word, so it is specifically used by a particular class only। then how do I define, we define a class inside another class, then how do I create object of inner class? to create object of inner class, what is compulsory? परफेक्ट, आपको इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको कंपलसरी क्या है? आउटर क्लास का रेफरेंस। तो आप आउटर का रेफरेंस डॉट न्यू इनर, तो इसका यूज करके आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, राइट। इनर क्लास के अंदर आप क्या क्या नहीं ऐड कर सकते, क्या नहीं इंक्लूड कर सकते? तो स्टैटिक कुछ भी नहीं चलेगा वहाँ पर, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक नेस्टेड क्लास कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सिंपल वाला? ठीक है। लोकल इनर क्लास का तो वेरी सिंपल है, उसके अंदर आप बस इंस्टेंस स्पेसिफिक लिखोगे, स्टैटिक कुछ भी नहीं लिख पाओगे, फिर उस क्लास को आप डिफाइन करोगे मेथड के अंदर, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो उधर ही, उसको एक्सेस भी उधर ही करो, दैट्स इट, एंड ऑफ। सिंपल, ओके। वन लास्ट थिंग अबाउट दी नेस्टेड क्लासेस, व्हाट इज दैट? स्टैटिक नेस्टेड क्लास। सो विल ट्राई अबाउट दैट स्टैटिक नेस्टेड क्लास। static nested, static outer class। okay, so I will write the static outer class and I will write class static nested class। so इसको, ये तो इनर क्लास हो गया, मुझे इसको क्या बनाना है? स्टैटिक। ठीक है, तो ऐसे अपने बन गया ये स्टैटिक नेस्टेड क्लास।
ये बन गया स्टैटिक नेस्टेड क्लास. Perfect. So what is static nested class? We know that. So what is static nested class? It is a class defined inside another class with static keyword outside of all other class components. How do I use static nested class? What all things I can write inside the, this should be the this question. What all things we can write inside the static nested class? आप static चीज़ें लिख सकते हो क्या static के अंदर? Yes. You can write both static plus instance. आप सब कुछ लिख सकते हो इसमें. So static nested class can contain both static as well as static nested class can contain both static as well as instance members. ठीक, simple. Now I will write everything whatever possible. So I will try to create a variable int a equal to let's say 1, int b equal to let's say 10, and I will make this as static. Yeah, tell me. Correct. Hmm. So let me reframe that. So you are saying I want to have one instance variable and one static variable. Both are having the same value. Okay, let's say this is 100 and I have a static variable int b equal to 100. Okay, correct. That's fine. This value is specific. Correct. 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 So this value is common. So this is stored only once. This is stored only once. Irrespective of there is an object or not, this value will be there. Whether you create. Yes. Whether you create object or not, this particular value will be there. No, no, that will not be assigned. This does not belong to object. This is something common they can access. Yes, perfect. So this belongs to object or class. Methods and blocks are part of a class. Hmm. Okay. So I want to print the value of b. I can directly write this. I can use the class name, or I can directly write this. Now, if I want to, now variable is already created. This variable is created at the time of class loading itself. Now, this variable is not created yet. This is not created yet. So this belongs to a particular object. Perfect. Correct. This
No, that will be there only. That is irrespective whether you create or like let's take this simply. Let's say we have a printer. This is something common for all of the students in a college. So before even students come, we have a printer in place. So that printer can be used by most of the students, right? So this is not tied to the student. This is not tied to the student. This is something already in place. So whenever the class is loaded in the memory, that particular variable is created. Whether the object is created, whether the object is not created, that value is already stored there. This is something later can be used by the objects. Now object, it has one value, that is this a value. This is particular to him. Now let's say roll number is something that belongs to that particular student, right? Now this is something, one college name. So this college name is before your student. Whether there is student or not, there will be a college name already there. So this is something not depending on the object. Correct, correct. So see here, methods and blocks are something, they not belong to, like data do not belong to method or block. So data belong to object. Now you think of this way. Let's say you have a car. Now car has attributes. Car has attributes. Now whenever we apply, now let's say you think of bank account also. We have balance field, account number also. So methods are working on that particular data. Data does not belong to methods. They are working on that only. These are just a functionality they are working. Now let's say think of a car. Car has a brake. So applying the brake is a functionality. So brake does not belong to the applying the brake functionality. It is just a functionality that is working on that data. So data belongs to the object. Data belongs to the object. Right? Okay, perfect. So let's talk about this where we were. Okay, so I will have this 1. This is let's say 10, and I have a static class, static nested. So inside this class also I have these two fields, right? I can have method also here. So I will have a method void m1 so this is the instance method from static nested class. Now I will write m2 method. Now this is a static method from static nested class. These are the things I have. Okay. See here. So I have a class which has two fields. One is A and one is B. This one is instance, this is static, and I have a static nested class. Now in this class I have a static method also, static void m1. So this m1 belongs to whom? Static method of outer class. This is outer class. This is just a outer class. Okay. Now we'll create a separate class just for testing purpose. Static nested, or I will say test static nested class. Okay. Okay. So I have this class. How do I access these members? Before we talk about this static nested class, how do I access these members? So these members I don't need to worry. For this we have to create object. For these two, do I need to create object? No, I can directly access. Now this particular field I can access whenever the object is created. The static outer equal to new outer class, and I say outer dot a. So this will print this value particularly. Now I want to access this B. How do I access B? Directly we can access with the help of class name, static outer dot B. I can access this directly. How do I access this method m1? Similarly, class name,
static outer dot m1. So if you see carefully, I am accessing the value static members directly with the help of class name. That's it. Now similarly, how do I create object of this class, or how do I access this class? I have a class name. What is that? Static outer dot static nested, and I will say reference equal to new static outer dot nested. See here how I did. Static outer class dot static nested class reference equal to. Now one thing, can you see here? If I want to create object of static nested class, I do not need to have object of outer class, because I am accessing using the class name. Even though I do not have the object of this, it is perfectly fine. So I do not need to create object of outer class to create object of static nested class. Perfect. Right? Now you tell me, inside the static nested class, I have one instance variable, one instance method, one static variable, and static method. So how do I access this static variable? So I can access this with the help of reference dot a. Similarly, how do I access this method? Reference dot m1. Reference dot m1. Now how do I access this variable b? Do I need to create object? No. How do I do that? Static outer dot static nested dot b. How do I access this method? Similarly, static outer dot static nested dot m2. That's it. So this is how we access the members of the static nested class. So how do I access the members of static nested class? Are we clear on that? Are we clear on that? Okay, now let's take one example where this static non-static classes we use frequently. अभी होता क्या है ना, अभी लेट से कोई भी एप्लीकेशन हो, उसमें डेटा बेस को कनेक्ट करने का लॉजिक होता है. तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिए होता है उसका यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड. तो लेट से आपके पास बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, तो सबका डेटा बेस को कनेक्ट करने के लिए आपको अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड लगेगा. लेट से आपके पास 3 डेटाबेस है, माईएसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेस. तीनों डेटाबेसेस के लिए आपको अलग अलग क्रेडेंशियल चाहिए. ये मुझे स्टोर करना है, इनका डेटा बेस का यूजर नेम पासवर्ड मुझे स्टोर करना है. लेट्स से ओरेकल का 3 इंस्टेंस है मेरा, लोकल, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन. मुझे क्या चाहिए? ओरेकल का डेटाबेस है मेरे पास, लेकिन मेरे पास ओरेकल के 3 डेटाबेस है. कौन कौन से? लोकल वाला, डेवलपमेंट वाला और एक प्रोडक्शन वाला. 3 डेटाबेस है. वैसे ही मेरा माईएसक्यूएल के 3 डेटाबेस है, लोकल, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन. तो अभी ये मुझे मेंटेन करना है. ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है, मुझे क्या करना है? कॉन्स्टेंट्स. तो आई विल क्रिएट अ क्लास, लेट्स से कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट. अब मुझे क्या करना है? एट हाई लेवल मुझे मेंटेन करना है ओरेकल का स्टैटिक क्लास ओरेकल. सिमिलरली माईएसक्यूएल. ठीक है. अब ओरेकल के मेरे पास 3 अलग अलग इन्वायरमेंट्स हैं, स्टैटिक, क्लास, लोकल, डेव और प्रोड. राइट. सेम चीज मेरे पास माईएसक्यूएल में भी है. राइट. माईएसक्यूएल आल्सो. अभी लोकल का मेरा कुछ अलग यूजर नेम पासवर्ड होगा, तो इसका भी एक स्टैटिक फील्ड है. ये भी स्टैटिक स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल टू लेट्स से ओरेकल लोकल यूजर नेम. ठीक है. सिमिलरली आई हैव पासवर्ड आल्सो, ओरेकल लोकल पासवर्ड.
तो सेम चीज़ मेरा तीनों के लिए है। यहाँ पे ओरेकल लोकल का वजह पे आप लिख सकते हो डेव। सिमिलरली ये सारा मेरे पास किसके पास है, ये सारा माई सिक्वल का भी ऐसे ही होगा कुछ, तो हम ऐसे ही माई सिक्वल का भी लिखते हैं। तो बस इसको ओरेकल माई सिक्वल का लोकल का यूजर नेम, तो आई विल राइट माई सिक्वल, आई विल जस्ट रिप्लेस दिस। तो ये अलग अलग क्रेडेंशियल्स रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे। ठीक है, अभी देखो आप, मेरे पास दो हाई लेवल स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस है, ओरेकल और माई सिक्वल। ओरेकल के अंदर मेरे पास तीन नेस्टेड क्लासेस है, लोकल, डेव एंड प्रॉड। लोकल के अंदर मेरा डेटा है, डेव के अंदर मेरा डेटा है, प्रॉड के अंदर मेरा डेटा है। माई सिक्वल के अंदर तीन क्लासेस है, स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस, लोकल, डेव एंड प्रॉड, तो उसके अंदर डेटा है। तो मुझे अभी सारा डेटा एक्सेस करना है। कैसे करेंगे एक्सेस? चलो एक्सेस करते हैं उसको, बहुत ईजी है। टेस्ट कांस्टेंट, ठीक है, इसके अंदर मेन मेथड लिखते हैं। तो अभी मुझे क्या क्या एक्सेस करना है देखो, पहले ओरेकल का लोकल, उसका यूजर नेम पासवर्ड, ये हो गया लोकल का। ओरेकल का डेव यूजर नेम पासवर्ड, ओरेकल का प्रॉड यूजर नेम पासवर्ड, और ये तीनों मुझे माई सिक्वल के लिए भी एक्सेस करना है। ठीक, दिस विल बी माई सिक्वल, माई सिक्वल एंड माई सिक्वल। चलो अभी एक्सेस करते हैं ओरेकल का लोकल डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड। कैसे एक्सेस करेंगे? पहला नाम क्या है आपका? कांस्टेंट। कांस्टेंट के अंदर क्या है? ओरेकल। ओरेकल के अंदर क्या है? लोकल। लोकल के अंदर यूजर नेम। वैसे सेम आपको क्या करना है, थोड़ा स्पेस देके, कांस्टेंट के अंदर ओरेकल, ओरेकल के अंदर लोकल, लोकल के अंदर पासवर्ड। तो ये क्या हो गया आपका ओरेकल का कौन सा? ठीक है, तो वैसे मुझे किसके लिए चाहिए? डेव के लिए चाहिए। वैसे मुझे प्रॉड के लिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? बस चेंज करो डेव, डेव, ओरेकल का डेव, ओरेकल का डेव, सॉरी हाँ, इधर ये डेव हो गया, इधर प्रॉड। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको? प्रॉड, ये सिंपल। अब ये सीधा का सीधा हम कॉपी करेंगे माई सिक्वल के लिए। अब ये सेम चीज़ हम क्या करेंगे ओरेकल के लिए? देखो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर माई सिक्वल का मुझे एक्सेस करना है, राइट? सो व्हाट आई विल डू, माई सिक्वल लोकल यूजर नेम पासवर्ड। कॉन्स्टेंट्स के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, ओरेकल, माई सिक्वल का लोकल यूजर नेम, माई सिक्वल का पासवर्ड। तो सेम चीज़ हम इधर भी करेंगे। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। तो यहाँ पे हम करेंगे माई सिक्वल का डेव, माई सिक्वल का प्रॉड, और ये इसको चेंज करेंगे बस डेव, इसको चेंज करेंगे डेव, इसको चेंज करेंगे प्रॉड। तो इस तरीके से आप डेटा एक्सेस करते हो। ये हो गया आपका रियल टाइम यूज केस। चलाओ इसको अभी, ये यूज केस आप प्रिपेयर कर सकते हो, बोल सकते हो। यहाँ पर ओरेकल का यूजर नेम पासवर्ड लोकल, लोकल यूजर नेम पासवर्ड, ओरेकल का डेव यूजर नेम पासवर्ड, परफेक्ट। ओरेकल का प्रॉड यूजर नेम पासवर्ड, माई सिक्वल का लोकल यूजर नेम पासवर्ड, फिर इसके बाद माई सिक्वल का डेवलपमेंट यूजर नेम पासवर्ड, माई सिक्वल का प्रॉड यूजर नेम पासवर्ड।
So prepare this use case. This is also used lot of time. ठीक है, लगता है डिफिकल्ट है लेकिन है नहीं, बहुत ईजी है. तो कैसे एक्सेस किया, टॉप क्लासेस से लेके अपन ओरेकल आए, फिर लोकल, ये सारा स्टैटिक है. ये भी इस क्लास के अंदर ये स्टैटिक फील्ड है. ओरेकल क्लास के अंदर अभी देखो कांस्टेंट में जाओ, कांस्टेंट क्लास के अंदर ये स्टैटिक नेस्टेड क्लास है, तो इसको आप क्लास के नाम से एक्सेस कर रहे हो, राइट. तो ओरेकल के अंदर जाओ, यहाँ पर ओरेकल के अंदर भी ये स्टैटिक नेस्टेड क्लास है, तो आप इसको एक्सेस कैसे करोगे, ओरेकल डॉट लोकल. लोकल के अंदर भी ये स्टैटिक फील्ड्स है, तो उसको कैसे एक्सेस करोगे, क्लास नाम के साथ, राइट. तो लोकल डॉट यूजर नेम, ओरेकल डॉट लाइक दिस, वी कैन कीप ऑन गोइंग एट एनी लेवल. तो ये दिस इज वन ऑफ द यूज केस वेयर वी यूज स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस. Simple. Okay. So with that we have completed your class components. So what are the things are there inside the class components? Let's just quickly, what are the class components we have? Variable, methods, blocks, nested class. वेरिएबल में क्या क्या टाइप है आपके पास, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल. सबका आपको यूज़ पता होना चाहिए, कैसे यूज़ करना है. मेथड्स में आपको इंस्टेंस मेथड्स है, स्टैटिक मेथड्स है, ब्लॉक्स के अंदर आपके पास इंस्टेंस ब्लॉक है, स्टैटिक ब्लॉक है आपके पास, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास डिफ़ॉल्ट, ज़ीरो एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. नेस्टेड क्लासेस में आपके पास है लोकल इनर क्लास, फिर इनर क्लास, स्टैटिक नेस्टेड क्लास. उसके बाद एनोनिमस क्लास भी हम सीखने वाले, लेकिन अभी आपको उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है व्हाट इज इनहेरिटेंस. एनोनिमस क्लास, तो एनोनिमस क्लास यूजुअली वी यूज टू create a subclass without a name. So anonymous class is a class which does not have a name. तो कैसे create करना है, कैसे use करना है, we will understand it once we know the inheritance concept. समझे. तो anonymous class mostly subclass create करने के लिए होता है, मतलब child class. Anonymous class हम create करते हैं to create a subclass which does not have a name, which does not have a name. So class without name is called as anonymous class. And why do we use anonymous class? To create a class, to create a subclass without name. ठीक है, जैसे हम inheritance पढ़ेंगे that time we will understand this, but for now it is sufficient for the anonymous class. So today you focus on what are the questions we can ask for each of the component, what it is, why do we use it, how do I use it, when do I use it, if there are any types. You basic question you can ask this for every other component. What is local variable, why do I use local variable, where they are stored, how do I use them, how do I access them, when do I use them, is there any different types also, that also we can ask. So today you can ask all of the questions for these. Most of the questions will be covered, right. So if you are very clear on this, then it is very easy to understand next concepts. And if you want to have a solid foundation, practice the assignments. Practice the assignments. Right? ठीक.